This little girl's brothers are in school. One day they will have to become the bread earners of the family, and the parents hope that the boys, having received an education, will be able to do better than they themselves have with their simple family profession in the fiercely competitive and specialization-oriented world of today. But the little daughter won't be going to school because her parents need her to work with them now. Indeed, this is very much the proverbial vicious circle. For vestiges of a past tradition bid that women pursue a life of toil for home and family, even from childhood, and thereby be deprived of their chance to acquire an education. Whereas opportunities for work are, of course, directly related to education. But even when they are sent to school, most girls in rural, semi-rural, and even quite urban areas do not study further than primary level. तो जब घर से किताबें लेकर निकलो ना तो वो कहते हैं कि घर में ही रहो, मत जाओ स्कूल में। हम कहते हैं कि क्यों ना जाए, हम स्कूल पढ़ेंगे, हमें पढ़ने का शौक है। वो कहते हैं कि नहीं पढ़ो नहीं, हम घर का काम करो। हमारे बड़े जो हैं वो घर का काम करते करते वो मर गए, अब घर का तुम भी काम करो। जब ये बात कहते हैं तो हमें गुस्सा आता है। हमें कहते हैं कि क्यों, हम जो दूसरे लोग पढ़ रहते हैं ना तो हमें भी शौक आता है कि हम भी पढ़ें ना। लड़कियां का पढ़ना इसलिए बेहतर है, गांव में लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती। हमारे गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को अनपढ़ ही रहने देते हैं और लड़के पढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आजकल लड़कियां और लड़के बराबर जा रहे हैं। मैं पढ़ के क्या कर सकती हूँ? 5 जमात पढ़ के तो कुछ भी नहीं कर सकती। 5 से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मेरे अब्बू कहते हैं कि अब आगे नहीं, वो मेरी छोटी 2 बहनें और है ना, आसमा और नबीला हैं। वो कहते हैं कि अब जो आसमा है ना वो 3री क्लास में है, जो नबीला है ना वो 5वीं क्लास में है। अब्बू कह रहे हैं कि अब नबीला जो है ना वो 5वीं पास करेगी ना तो उसे उठा देंगे, स्कूल नहीं पढ़ने देंगे। मगर मैं कह रही हूँ कि नहीं, हम उसे पढ़ने देंगे। अगर अब्बू ने ना उसे पढ़ाया तो मैं उसे खुद पढ़ाऊँगी। The Faisalabad Polytechnic Institute is one of many similar institutes offering training to girls aimed at immediately making them able to take up certain professions. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में 4 डिपार्टमेंट है। नंबर 1 है ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग। नंबर 2 कॉमर्स डिपार्टमेंट। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स और नंबर 4 है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज़ डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। इसके लिए ज़्यादा चार्म है लड़कियों को कंप्यूटर में। लड़कियां, ये इस वक्त हमारा 3रा सेशन जा रहा है जिसमें हमारी जॉब जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 100% कि जितनी लड़कियां हमारी पास होती हैं सब की सब जॉब में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ईज़िली एडजस्ट हो जाती हैं। और इनकी एडजस्टमेंट में एज ए सेक्रेटेरियल मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, एज ए सेक्शनिस्ट, और ये बड़ी आराम से और बड़ी अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। और इसमें जो ज़्यादा फ़ायदा पॉलीटेक्निक के लिए है, पेरेंट्स में ज़्यादा, जो पेरेंट्स में इसमें ज़्यादा चार्म है वो ये है कि लड़कियों को फ्यूचर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये फेस कर सकें, खुद से स्टैंड कर सकें और ख़ुद से ये अपनी सोसाइटी में अपना मकाम हासिल कर सकें। ये जो कोर्स है इससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। हम लोग कुछ भी हर फील्ड में जा सकते हैं। किसी भी फील्ड में हम लोग जाना चाहें तो ये जो कोर्स है हमारी हेल्प करेगा।
के वो आगे चलने देते हैं कि नहीं लोग मैं चाहती मैं जॉब नहीं वो मेरे शादी के बाद भी जॉब करना चाहती। मसला ये कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो एक तो औरत को महकूम बना कर रखना चाहते हैं कि वो सिर्फ घरदारी करे और उसके बच्चे संभाले जो उसके, क्योंकि हमारे माशरे की औरत अब मर्द के शाना बशाना चलना चाहती है, वो वही कुछ करना चाहती है जो कि वो अपने मुल्क को दे सकती हो। तो इसलिए काफ़ी वो हाउस वाइफ बन के रहना नहीं चाहती, सिर्फ वो चाहती है कि वो भी अपने वो जिस मकसद के लिए पढ़ रही है उसकी पढ़ाई का कुछ तो मकसद हो, वो कुछ तो करे अपने मुल्क के लिए। सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं हो सकती कि घरदारी के लिए या हांडी चूल्हे के लिए वो रह जाए। मेरा नाम ਜ਼ਰੀਨਾ है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। फिर हुण 12 साल हो गए ने मैंने नौकरी करदे हैं। तो इत्थे बहुत पढ़ते लिखते लोग ने। तो जदों मैं दूसरे लोगों को देखनी है तो मेरा भी दिल करता है कि मैं पढ़ी लिखी हुंदी तो मैं कुछ होर करदी। तो हुण भी हजे तक भी मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ा लिखा, लेकिन हुण हालात फिर इस तरह के हो गए हैं कि हुण मेरी शादी हो गई, फिर हुण मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ लिख सकती। If this circle is to be broken, work must take on new directions, and the problem must be pursued to the roots. Unfortunately, in Pakistan, the literacy rate for women is less than 16%. In rural Punjab, which is supposed to be the most literate, it's only 9%. 9. And in rural women, Balochistan, it's less than 1%. And personally, we have seen that all the Southeast Asian countries have come into the development sector because of literacy. Because majority of its women, more than 70%, are now educated and literate. Without that, women will keep on being used by the system. So therefore, we started a program, our organization called Bunyad, that we are working in 500 villages. We have over 16,000 students of those villages. The local teacher from that village is taken and trained, because we feel when the rural woman is literate, only then can the society change. Only then can there be a change which is very important as far as development is concerned. What we have been doing is giving people in the village what they sometimes don't even want, what they don't even need. So that empowerment is coming, that we can also make our children literate. We can also provide good health. We can also have a better future. We don't have to look to anyone else. We can do it ourselves. So that sort of empowerment can only come when women and the majority are educated, are literate. And this myth is broken, that fathers and parents don't want their children, their girls, to be educated. No father has complained. They are all very happy. We have 500 centers and we have demand for 5,000. And this myth that Islam is anti-women becoming literate is all, we have proved it incorrect. So literacy is the first step to development for any young country like ours. In rural and tribal society, many girls either never start primary school or drop out early for both cultural and economic reasons. At the age of around 12, they are almost illiterate, when they could have been ready for middle or prep school. The Adult Basic Education Society, an NGO, encourages such girls to enroll in intensive
primary school courses, enabling them to enter high school with the loss of no more than perhaps 2 or 3 years. Another ABES program works from the other end, providing literacy courses to adult women in premises often donated by those who care. Adult women come bearing with them often their life responsibilities. And yet, in these and in the nationwide project pursued by the Prime Minister's Literacy Commission, the response from women is as that of an eager child. Perhaps deeper yearnings are at work. But there is also the but. कि अगर जो तालीम होनी चाहिए इस्लाम की तो कुरान शरीफ पढ़ा जाए, 1-2 जमातें पढ़ ली जाए ताकि वह बहुत है, पर्दे के अंदर रहे। इस्लाम ने कोई मना नहीं किया औरतों की तालीम से। उसने तो बराबर कहा कि वो कहता कि अपने मजहब से वाकफियत हो और औलाद उसी वक्त कामयाब होगी जब माँ उसकी लिखी पढ़ी होगी। जिसकी माँ लिखी पढ़ी उस बच्चे को लो, दूसरे बच्चे को लो, दोनों में बड़ा फर्क होगा मालूमात हासिल करने में। बड़ा ज़रूरी है औरत का पढ़ना। तालीम जो मसलो है तालीम असां वटि आहे ई कान का, स्कूल न आहे, तालीम आहे ई कान का। छोकिरनि जो स्कूल आहे त उन्हनि जे स्कूल में वरी निगरी थियूं पढ़नि, त के मर्द छॾीनि था निगरी त के छॾीनि कनि था। तंहिंखां पोइ वीचारियूं निगरियूं वेठियूं आहिनि, हेतिरियूं पढ़नि थियूं, पोइ वॾी थियूं थियनि, पोइ विहारे छॾियूं। One way around the problem is educational programs like the one initiated by the Allama Iqbal Open University for girls who cannot leave home. Our first part was dealing with comprehension study, in which we saw film, followed by a few questions. Then we had pronunciation practice. The same words were used for word meanings. जैसा कि आप जानती हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन को तालीम दी जाती है जो बआसानी घर से बाहर नहीं आ सकती। लिहाजा इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए हम यहाँ पर मिडिल और मैट्रिक पढ़ने वाली ख़वातीन के लिए ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं जो कि वो घर में बैठकर बआसानी समझ सकें बगैर किसी मदद के। लिहाजा हम अपनी कोर्स की किताबों के साथ साथ उनको ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स भी देते हैं ताकि वो इनको कोर्सेज़ को पढ़ने के साथ साथ उनकी आवाज़ भी सुन सकें और उनको देख भी सकें। मेरा ख्याल है कि ये तरीक़ाकार हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 6th 5-year plan के ज़माने से चली है। The concept of an open university, using the tools of distance learning, started life elsewhere in the world with other aims in mind. Here, in a conservative society, a whole new world can be opened up for housebound women. Our university very consciously developed a two-pronged attack. One was to make our own courses more interesting for women, and second was to have programs which are below high school degree. And in that program, which we call basic functional education, and high school diploma programs, we sort of discriminated positively for women. So with this conscious policy, we have improved our ratio of female students, which is now around 40 to 35%, depending on the courses. This is the Teacher Education Department of the Allama Iqbal Open University. It caters to the training of 3 levels. The teachers at primary level, the teachers for middle school, and the teachers for high school. At present, we have about 7,500 enrolled for this current semester, and we have already trained 20,000. And the enrollment in all these courses for females has been 50%. Well, in terms of fertility and education, Pakistan is facing a chicken and egg situation. 65% of the population comprises 26 or less than 26 years of age. Now, obviously, this has an impact because it's a population momentum. They are all in the reproductive age group.
either going to become parents or have become parents. The other serious aspect of the characteristic of Pakistan's population is that 39% are less than 10 years of age. And that is putting a tremendous pressure on the primary education system. Because there is a direct relationship between fertility and education. The Pakistan Demographic and Health Survey, which was carried out in 1990 and 91, has established from the Pakistani data that females who have no education at all have a total fertility rate of about 5.7. That means the number of children born to a woman between the age of 15 and 49 is the total fertility rate. Now, those who had primary education, the number of children, the average number of children in this age span is less. And those with secondary education, which is about 10 years education, it is about 3.6. With those who had middle education, it's 4.5. With those who had primary education, it's 4.9. And those who had no education is 5.7. So unless we can break this vicious circle of what to do with literacy and what to do with the practice of family planning, the problem is going to accentuate. Governments do not educate our children. Parents educate children. More often, women educate children. Governments do not teach values to our children. Parents teach values to our children. More often, mothers teach values to our children. So how do we tackle the problem of population growth in a country like Pakistan? We tackle it by tackling infant mortality, by providing our villages with electrification, by raising an army of women, 33,000 strong, to educate our mothers, our sisters, and our daughters in child welfare and population control. उसको सारा घर का काम करना पड़ता है, हर साल बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, और वो इतनी she is the only sufferer. Why? Because घर की ओवरलोड, बच्चे पैदा करने और अपनी कम से कम न्यूट्रिशियस उसको डाइट मिलती है, जो कि ये चीज़ जब पेशेंट आती है ना, उस वक्त मुझे बड़ा उनकी मिजरेबल ये हालत लगती है, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें एंटीनेटल में साल पर साल बच्चे पैदा कर रही हैं, उनका कोई बच्चों की तादाद, नंबर, स्पेसिंग में उनका कोई अथॉरिटी नहीं, कोई राइट नहीं है. उनके हस्बैंड उनको ये समझते हैं कि जैसे ये शी इज़ द ओनली चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग मशीन. हमारा मुआशरा गरीब मुआशरा है. हमारे लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं, जहाँ ना तालीम है, ना सेहत की सहूलतें हैं, ना उनके पास ज़राए आमदोरफ्त हैं, और हस्पताल में लोग आमतौर पर नहीं आते कि हस्पताल जाकर मर जाते हैं. तो ये सारा जो उनका है ख्यालात, ये हमने उनकी तरबियत करके, उनको तालीम देकर ये ख़त्म किया है. इसके साथ ही हमने माँ और बच्चे की सेहत पर अवामुल नास की तालीम और तरबियत शुरू की हुई है, जिसमें हम गाँव में, घरों में, सेंटरों में, गलियों में जाकर माँ और बच्चे की सेहत और फैमिली प्लानिंग पर तरबियत देते हैं. इसके कामों में से ख़ुसूसी तौर पर दाइयों की तरबियत, जो कि रवायती गैर तरबियत याफ्ता हैं, और उसके साथ साथ उनके रिफ्रेशर कोर्सेज शामिल हैं. क्योंकि रवायती दाइयों के किरदार को या रवायती दाइयों के काम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम उनको बेहतर बना सकते हैं और लोगों की ज़रूरत और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उनसे काम ले सकते हैं. कि उन्हें बीमार होंदियां हुण जड़ियां असी उन्हां नूं अलामतां बीमारी वालियां ने ना, वो खुद असी उन्हां नूं दसने ते कोई बीमारी नहीं. अगे तो दुनिया बहुत मरदी सी औरतां हमल दे दौरान, झचकी दे दौरान,
खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ बच्चा मुंडा पैदा होने पे कितने पैसे मिलते हैं ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 200 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਛੱਡਦਾ 100-150 ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਹੋਣ ਉਹ ਚ 4 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਮਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰ ਤਬਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਹੇਜ਼ ਦਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ बेटी ज्यादा अजीज है अल्लाह ताला नूं रहमत है अल्लाह दी लेकिन जो साढ़े घर बेटी हुंदी है ते सस्सां ते खावत जिहड़े ने कहंदे ने बेटी हो गई इहदे घर ते जे तुहाडे मतलब हुण बेटी होवे ते की महसूस करो अफसोस Not always was knowledge equated to information. And there were times when daily labor was more directly connected through the lives of people to their aesthetic and creative natures. Hand, heart, and mind worked, it could be, in harmony. The male Eurocentric industrial society insists on there being a separation between craft and art. I think the peculiar history, women's history in Pakistan has been quite unique in that women have been almost the pioneers in art education and in art. Over the last 10 years, I think a very special situation has evolved in which women who've been in the forefront of the political movement in Pakistan have also taken the lead in the creative arts. And now the struggle is to revive and to make connections with those women who are not considered artists in the male European sense of the word. In other words, they are craftswomen. They are women who are artists in their own right when they embroider in their homes or they make baskets or they tie and dye. Now for people like myself who was educated as a painter, I think we have to look for the well springs of our inspirations, not where we looked before, but to look here in the work of women who are not educated in the formal sense, but I think carry with them centuries of aesthetic tradition. But the creed of the times changes, and the old forms of knowledge are no longer enough. मैं हुण भी चाहनी है कि मैं हुण भी पढ़ती लिखती लेकिन मैं तो हुण कुछ कर नहीं सकती अगे मैं सर्वस यही कर रही हूँ चलो मेरे वास्ते तो बेहतर ही है मेरा तो चल ही रहा तो मैं अगे चाहनी है कि दूसरी खवातीन वास्ते कुछ ना कुछ होना चाहिए उन्होंने मुस्तकबिल वास्ते कुछ करना चाहिए लोगों ताकि वो इस हालात तो ना गुजरन हम मिलकर कदम उठाएंगे हम मिलकर कदम उठाएंगे हम बहनों को जगाएंगे हम बहनों को जगाएंगे हम So that is what we are doing. We are going to them, changing it there, and saying you don't need the government, you don't need me, you need you.